Hello students. Today in this episode I'll show you about the ray diagrams. Okay, very important topic, and this topic is definitely from this topic the questions will come in your board examination. ये सबसे ज़्यादा important topic है CBSE, ICSE, SSC तीन बोर्ड के लिए भी ये रे डायग्राम्स बहुत ज़्यादा important है. Okay, how to draw the ray diagram. Okay, what is the rules to draw the ray diagram. Okay, object locations are there, 6 object locations are there, concave and convex mirror. क्लियर, ये सारे चीज हम करेंगे अभी. ठीक है, पहले रूल्स करेंगे. ओके, व्हाट आर द रूल्स ओके टू ड्रॉ द रे डायग्राम्स. क्लियर, सो टुडेस टॉपिक इज रे डायग्राम्स. Clear, ray diagrams of concave mirror, of concave mirror. कॉनकेव मिरर. ठीक है, सो पहले तो इसके रूल्स देखेंगे कैसा उतारना है. ठीक है ना, क्या क्या रूल्स है, किस तरीके से रे डायग्राम्स उतारना है. ओके, सम ऑफ द रूल्स आर देयर. सो रूल 1, clear. Here rule 1 here, suppose if, okay, listen carefully, if the incident ray, if the incident ray IR means incident ray, clear, is parallel, okay, to principal axis, PA means principal axis. Okay, don't forget here. Okay, if the incident ray is parallel to principal axis after reflection, okay, after reflection, the reflected ray, RR means reflected ray, clear, reflected ray should pass through focal point, Clear, this is the first rule to draw the ray diagrams. What is the rule here now? If the incident ray is parallel to principal axis, after reflection, the reflected ray should pass through focal point. Now, इसके लिए क्या चीज की तुमको जरूरत है वो चीज मैं बताऊं. पहले तो आपके पास रूलर होना. ओके, रूलर कंपल्सरी है ना, स्केल. ओके, देन सेट स्क्वायर, एक सेट स्क्वायर ले लो. ठीक है ना, इसकी जरूरत है, स्केल, सेट स्क्वायर, और देन प्रोट्रैक्टर. ओके, यू शुड हैव द प्रोट्रैक्टर. ये तीन चीज की ज्यादा जरूरत है. ठीक है ना, ज्यादा जरूरत. ये आपके पास है, हर चीज क्लियर नहीं कर सकते. ठीक है ना, तो अभी इसके कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताऊंगा. ओके, हाउ टू यूज दिस ऑल थिंग. फर्स्ट यू टेक द रे. Okay, the incident ray, okay, is parallel to principal axis. Okay, first you draw the principal axis. ठीक है, एक principal axis यहाँ पे उतार लो. ऐसा principal axis एक उतार, एक लाइन उतार लो बस. ठीक है ना, ये principal axis. ये क्या है, ये principal axis. ठीक है, this called the principal axis. ठीक है, then after drawing the principal axis, okay, take the protractor. प्रोट्रैक्टर को कैसा रखना है मैं अच्छी तरीके से बताऊंगा. अच्छा सुन लो कैसा रखना है. ठीक है, 90 डिग्री से रखना है बीच में. दिस 90 डिग्री से, ये 90 डिग्री से स्ट्रेट लाना, इसके स्ट्रेट, ये प्रिंसिपल एक्सिस के स्ट्रेट रहना. ठीक है, आपका प्रोट्रैक्टर ऐसा रहना 90 डिग्री से, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे रखना. ठीक है, यहाँ पे 90 है, एग्जैक्टली यहाँ पे 90 है, ये लाइन के बराबर 90 है. प्रिंसिपल एक्सिस जो है 90 से क्रॉस हो रहा है. ऊपर की तरफ 50 लिखा हुआ है ना, यहाँ 50 लिखा हुआ है, यहाँ एक पॉइंट डाल दीजिए. नीचे की तरफ काउंट करो, नीचे भी 51 लिखा हुआ है. ऊपर पे स्केल में भी 50 रहता, नीचे के स्केल में 50 डिग्री का. तो 50 to 50 ज्वाइन करो, ये मैं ज्वाइन कर दिया. 50 to 50, ये आपका बन गया कर्व सरफेस.
क्लियर, क्या बोलेंगे इसको, कर्व सरफेस। ओके, किसका कर्व सरफेस है ये, कॉन्केव मिरर का। ओके, ये कॉन्केव मिरर मालूम करने के क्या है, इसके लिए शेडिंग डालना जरूरी है। यहाँ पे शेडिंग डाल देना, बाहर की तरफ शेडिंग रहता। इफ द शेडिंग इज बैक ऑफ द मिरर हियर, इट इज अ कॉन्केव मिरर। इसके अपोजिट अगर शेडिंग अंदर है, अगर शेडिंग अंदर की तरफ है, देयर इज अ कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स ऐसा है ना, ये कॉन्वेक्स, अंदर शेडिंग रहता, यहाँ पे शेडिंग रहता। ठीक है ना, ये कॉन्वेक्स, बट दिस इज कॉन्केव, कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो ये बन गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, ये कॉन्केव, कॉन्केव मिरर लिख दिए, कर्व सरफेस। ओके, कॉन्केव मिरर का कर्व सरफेस है। देन यहाँ का पहला, अब सेट स्क्वायर ले लो। ओके, टेक द सेट स्क्वायर। ओके, ये सेट स्क्वायर लेके क्या करो उसको, ओके अरेंज लाइक दिस, ऐसा अरेंज करो उसको। इसका जो टिप रीजन है ना, जीरो रहता है यहाँ पे। ठीक है, वहाँ लेके यहाँ पे लगा दो, एग्जैक्टली यहाँ पे लगा देना। ठीक है, यहाँ पे लगा के इसके डायमेंशंस बताना। Dimensions are very very important for the ray diagrams, all the ray diagrams. Okay, so this one from here 0, यहाँ पे 0 रहेगा पहले, 0 क्लियर। यहाँ से 0 to 2 क्या लेना, 0 to 2, 2 to 4, so 0 to 2, ओके 2 to 4 ऐसा पॉइंट कर लो। ठीक है, 0 to 2, 2 to 4, ये बड़े इंस्ट्रूमेंट है इसलिए दूर दूर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, आप स्केल आपके कंपास बॉक्स के यूज करेंगे तो एग्जैक्ट मेजरमेंट आएगा, एग्जैक्ट मेजरमेंट आएगा। ठीक है ना, तो सेट स्क्वायर क्या करना है, स्केल से भी ले सकते। ओके, नॉट कंपल्सरी टू टेक द सेट स्क्वायर ओनली, scale also you can take, but if you take this one exactly you can keep this arrow mark here, यहाँ पे हम रख सकते हैं, exactly यहाँ पे रख के ले सकते हैं। आपका डायग्राम एक्यूरेटली बराबर आता, exactly करेक्ट आता if you take this one, clear। so 0 then 2 and 4, these are the dimensions। क्या बोलेंगे इसको, dimensions। तो ये डायग्राम, जैसा डायग्राम यहाँ पे उतार रहे हैं, कोई भी रे डायग्राम, वट एवर द रे डायग्राम्स यू आर ड्राइंग हियर नो, द डायमेंशंस आर सेम। ओके, dimensions you have to take same। okay, 0 then 2 and 4, 0 to 4। what 0 means, 0 is nothing but a pole, 2 is what here, focal point, 4 is what, center of curvature, here like that। so 0 here, it is a pole। okay, 0 to 2, what is 2 here, focal point। okay, 2 to 4 here, center of curvature। ये बन गया आपका डायग्राम। ठीक है ना, अभी ये लेंगे, यहाँ पे करेंगे। अभी एक रूल क्या बोले थे, व्हाट इज द रूल, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहना है। ठीक है ना, सो टेक द स्केल, टेक योर स्केल एंड ड्रॉ वन पैरेलल, वन इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे शुड बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इंसिडेंट रे उतार लो यहाँ से एक। ठीक है ना, ये एक इंसिडेंट रे यहाँ पे उतार दिया। ओके, आई आर मीन्स इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है ना, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्या बोला, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, द रिफ्लेक्टेड रे शुड पास थ्रू द फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट से पास होना है उसको, तो फोकल पॉइंट से लाइन मार दो, ये दो ज्वाइन करो फोकल पॉइंट्स, क्लियर, ये और ये फोकल पॉइंट एग्जैक्टली क्लियर, ये पार हो गया, क्लियर, अंडरस्टूड यू नो, इंसिडेंट रे। okay, this is the incident ray should be parallel to principal axis, after reflection the reflected ray should pass through the focal point। अब यहाँ लाइन बड़ी भी उतार सकते, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, आर आर आर, आर आर मीन्स रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर। शो द एरो मार्क्स है ना, एरो मार्क बता दो यहाँ पे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर, होप अंडरस्टूड ना, समझ में आ गया होगा पूरा। ठीक है ना, क्या करें, पहला रूल क्या है यहाँ पे, पहला रूल क्या है, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे शुड पास थ्रू द फोकल पॉइंट, ये फर्स्ट रूल है, दिस इज द फर्स्ट रूल, क्लियर। एंड व्हाट आर द डायमेंशंस वी हैव टू टेक फॉर ऑल द रे डायग्राम, 0 2 4, and what the names you have to write, 0 means pole, this is the pole, this area is called as a pole,
इसको पोल बोलेंगे, ठीक है। 2 जो ले रहे हैं यहाँ पे मेजरमेंट, ये क्या है यहाँ पे फोकल पॉइंट एफ। नेक्स्ट 2 to 4 ये इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर, दिस इज द फर्स्ट रूल। क्लियर, अभी सेकंड रूल करेंगे। आपके पास कंपास बॉक्स तो होंगे ना, कंपास बॉक्स में आपके इंस्ट्रूमेंट सारे हैं, कंपास बॉक्स, ठीक है। तो इस सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे उसके अंदर, ठीक है। नाउ सी सेकंड रूल करेंगे अभी। व्हाट इज द सेकंड रूल? रूल 2, सेकंड रूल, ठीक है। अभी सेकंड रूल क्या है यहाँ पे? ओके, इफ द इंसिडेंट रे, ओके, if the incident ray IR, if the incident ray, okay, passing through, if the incident ray passing through focal point, F का मतलब क्या है यहाँ पे? focal point, remember this abbreviations, okay। if the incident ray passing through the focal point से अगर पास हो रहा, then after reflection, okay, after reflection, the reflected ray, simply you can write RR, okay, the reflected ray RR, reflected ray should be parallel to principal axis, PA means principal axis. Clear, understood? You know what is the second rule? If the incident ray passing through the focal point after the reflection, okay, after reflection, the reflected ray should be parallel to principal axis, ठीक है ना। चलो अभी उतार लो फिर एक बार। Okay, basic diagram is this one, okay। Draw the principal axis, clear, this one is the principal axis, okay। Then what I told here, principal axis में क्या करना है हमको, okay, प्रोटेक्टर का 90 डिग्रीज, एग्जैक्टली 90 डिग्रीज इसके बराबर आना, स्ट्रेट में आना, इट शुड बी स्ट्रेट हियर। क्लियर, ये 90 डिग्रीज यहाँ से एग्जैक्टली बनना 90। ऊपर से 50 मेजरमेंट करना, नीचे से 50 मेजर करना, नीचे भी यहाँ पे नीचे 50 लिखा हुआ रहेगा, ऊपर भी 50 रहता, ठीक है ना। तो 90 पे एग्जैक्टली रखे एक कॉर्ड। क्लियर, फिर से बन गया बेसिक डायग्राम यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस एंड कर्व्ड सरफेस। किसका कर्व्ड सरफेस है? कॉनकेव मिरर। विच मिरर? कॉनकेव मिरर। सो कॉनकेव मिरर मतलब शेडिंग बाहर जाना, शो द शेडिंग हियर। Clear, what are the dimensions we have to take here now? What are the dimension? 0, 2, 4. What is 0 means here? Pole. What is 2 means here? Focal point. What is 4 means here? Center of curvature. Clear? Now take the dimensions now. Okay, take the set square and then measure it perfectly. जैसा मैं measure कर रहा हूँ वैसे करो, ठीक है ना। ऐसे measure करना exactly, ऐसे ही रखना, सेट स्क्वायर रख के सो मेजर करना। ये 0 है, 0 to 2, ओके, 2 to 4। क्लियर, आप भी ऐसे ही मेजर करो, ठीक है ना। टेक योर सेट स्क्वायर एंड डू इट। सो हियर व्हाट वी हैव टू राइट, दिस इज द पोल, 0 मींस पोल, 0 to 2, 2 is nothing but a focal point, 2 to 4, 4 is nothing but a center of curvature। अभी तो हो गया। Now, what we told here in the rule, second rule, what we told here, if the incident ray passing through the focal point, after reflection, the reflected ray should be parallel to principal axis,
भी पास करेंगे। इंसिडेंट रे शुड पास थ्रू द फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट से पास करना है, ये फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट से यहाँ पे पास करो, ठीक है ना, ये इंसिडेंट रे। क्लियर, इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट, ये एरो मार्क बता दो। ओके, दिस वन इज द इंसिडेंट रे, IR। Clear? Incident ray, what is the rule? Second rule here. If the incident ray passing through the focal point, okay, after reflection, the reflected ray should be parallel to principal axis. अभी इसको reflected ray pass बताओ यहाँ पे, reflected ray बताओ यहाँ पे. Show the reflected ray here now. Is the reflected ray? RR. Show the arrow mark. Clear? This is a reflected ray. Clear? This is second diagram. Clear? क्लियर अंडरस्टूड यू नो, दिस इज द इंसिडेंट रे। पहले सेकंड रूल क्या है यहाँ पे, बोलो सेकंड रूल। सेकंड रूल में इंसिडेंट रे अगर फोकल पॉइंट से पास होते हुए निकल रहा है तो मिरर पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन रे मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे, ओके, कहाँ से पास हो रहा है यहाँ पे, इट शुड बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये हो गया, ये सेकंड रूल। ठीक है, हर रे डायग्राम में डायमेंशन सेम रहेंगे, 0 to 4। ओके, 0 क्या बोलेंगे, पोल, ओके, 2 क्या बोलेंगे, फोकल पॉइंट, 4 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, तो कंपोज बॉक्स में आप ले लिए तो आपके इंस्ट्रूमेंट्स है, छोटे इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट है ना, प्रोटेक्टर है, ओके, प्रोटेक्टर, देन सेट स्क्वायर, स्केल, इसका मेजरमेंट एक्यूरेटली मेजरमेंट लेके उतारना, टेक ए एक्यूरेट मेजरमेंट, ओके, विद द स्केल, ओके, और विद द सेट स्क्वायर एंड द 50 ईयर। सी इसमें देखो, प्रोटेक्टर में देखो ऊपर 50, 90 बीच में लिखा हुआ है, ओके, या बीच में 90 लिखा हुआ है ना, ये बीच में 90 लिखा हुआ था यहाँ, ठीक है। ऊपर के लाइन में देखो कहाँ से शुरू हो रहा है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 अप टू 180, ठीक है, ऊपर की तरफ देखो ऊपर। अब नीचे से और फिर यहाँ से काउंट कर लो, फिर 0, 10, 20, 30, 40, 50 अप टू 180, इधर से 110, इधर से 0 to 180, इधर से फिर 0 to 180, 2 सर्कल्स, 2 मेजरमेंट्स, 2 डिग्रीज, ठीक है। ऊपर की तरफ यहाँ पे 50 लेना, यहाँ पे मार्क करना 50, ठीक है, यहाँ से एग्जैक्टली मार्क करना 50, फिर यहाँ से ड्रॉप करते हुए आके नीचे भी 50 है ना, यहाँ 50 पे लाके रोक देना। क्लियर, ये मेजरमेंट एक्यूरेटली लेना, बराबर लेना, तो आपका डायग्राम एग्जैक्टली करेक्ट आएगा। क्लियर, मेजरमेंट यू टेक परफेक्टली, ओके, एक्यूरेटली, सो योर डायग्राम विल बी 100% करेक्ट। कीप योर पेंसिल कंप्लीटली शार्प, अच्छे से शार्प कर लो पेंसिल, उसकी निब शार्प रहना, ओके, एंड यूज द इंस्ट्रूमेंट, परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट। क्लियर, ठीक है, दिस इज द सेकंड रूल। क्लियर, फर्स्ट रूल completed, second rule, then we'll go to third rule now. ये डायग्राम ऐसे ही रख रहा हूँ क्योंकि सेम डायग्राम है, उतारना तो सेम है, अपने सिर्फ रूल बदलेंगे। कॉनकेव मिरर बाहर की तरफ शेडिंग करना, ठीक है ना, और कॉन्वेक्स मिरर को अंदर की तरफ शेडिंग करना। डायमेंशंस फॉर ऑल द रे डायग्राम्स आर सेम, 2, 3, 0 to 2, 2 to 4। क्लियर, ठीक है ना, ये डायमेंशंस है, पोल, दिस इज द फोकल पॉइंट एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, ये तो बेसिक डायग्राम तो सबको आ ही गया होगा। ठीक है ना, ये लाइन बड़ी भी उतार सकते हो, प्रिंसिपल एक्सिस अप टू यहाँ तक भी रख सकते हो आप, इतनी बड़ी भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है ना, अभी थर्ड रूल, फर्स्ट रूल तो हो गया, नो थर्ड। No, what is the third rule? You know, if the incident ray, if the IR, इंसिडेंट रे, IR का मतलब है इंसिडेंट रे, ओके, क्लियर, पासिंग थ्रू
passing through center of curvature. Okay, passing through center of C is nothing but a center of curvature. Okay, it will not deviate. It will not deviate. Clear? It will not deviate. Clear? ये deviate नहीं होता, ठीक है ना? It will not be deviate. The reflected ray यहाँ से लिख सकते उसके बाद का सेंटेंस भी the reflected ray. Okay, the reflected ray retrace the same path. Okay, retrace the same path. ठीक है ना? This is the third rule. If the incident ray passing through the center of curvature, it will not deviate. The reflected ray retrace the same path. Clear? Retrace the same path. अब ये diagram कैसे बताएंगे हम यहाँ पे? Take the scale passing through the which one center of curvature. अब ये center of curvature को लेना है. Okay. Draw a incident ray. Clear? This is the incident ray. Clear? Incident ray passing through the center of curvature. Center of curvature. So when it is passing through the center of curvature, it will not deviate. That means it will not reflect. It retraces the same path. It retraces the same path. जहाँ से शुरू हो रहा वहाँ से, ठीक है? इसको ऐसा भी उतार सकते हैं, ऊपर से भी उतार सकते हैं आप, ठीक है? अभी बताता हूँ आपको. दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? यहाँ से भी बता सकते हो, ऐसा भी बता सकते हो, यहाँ से भी बता सकते हैं, ये ऐसा भी बता सकते हैं, ठीक है ना? लाइक दिस ऑल्सो यू कैन शो. ओके, लाइक दिस ऑल्सो यू कैन शो, ठीक है? बट एनी हाउ द इंसिडेंट रे विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार हो गया, ठीक है? दिस इज इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे, ओके, पासिंग. देन वंस इट मूव हियर नो, इट रिट्रेस द सेम पाथ, यहीं से वापस आ जाएंगे फिर दोबारा. क्लियर? सो परफेक्ट डायग्राम उतारने के लिए नीचे से उतारो, ठीक है? दिस इज द थर्ड वन. Now last fourth rule. Total 4 rules are there that we have to follow to draw the ray diagrams of concave mirror. Concave or convex mirror, we have to follow these rules. Total how many rules are there? 4 rules are there. Now fourth rule. Okay. Now in fourth rule, you know, if the incident ray passing through, okay, if the incident ray is passing through, okay, passing through principal axis. Now last and final one, principal axis. Principal axis. Clear? If the incident ray, IR का मतलब क्या है? Incident ray. So if the incident ray passing through the principal axis, then the reflected ray retraces the same path. Okay, the reflected ray RR. Okay, the reflected ray retrace the same path. Clear? So draw the same diagram here now. Okay, I'll show you. Okay, principal axis. Okay, ये principal axis हो गया. Okay, then here what we're doing here now? Okay, 50 from upside, 50 from down. Clear? This is a concave. And show the shading here. यहाँ पे shading बता दो. Shading बाहर बताने का मतलब क्या है? This mirror is nothing but a concave mirror. ठीक है? Then what are the dimensions we have to take here now? 0 is nothing but a pole. Okay, 0 to 2. Okay, what is 2 here now? Focal point. 2 to 4. What is 4 here? Center of curvature. ठीक है ना? Now, if the incident ray passing through the principal axis, ये principal axis है. अगर यहाँ से जा रहा, okay, same, it retraces the same path. Clear? Incident ray is going like this here.
आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे वंस अगेन रिट्रेस द सेम पाथ, यहीं से आएंगे, जहां से जा रहा है वहीं से रिट्रेस हो जाएगा. Clear? This is the fourth rule. So total 4 rules are there to draw the ray diagrams. Clear? These are the 4 rules. Clear? Now, after these 4 rules, now we'll study how to draw the ray diagrams. Okay, ray diagrams and object locations. 6 object locations are there. That will start. Okay, so we'll start. Now, the ray diagrams of concave mirror and 6 ऑब्जेक्ट लोकेशन विल स्टडी नाउ. ठीक है, 6 पूरे ऑब्जेक्ट लोकेशंस करेंगे अभी. ओके, ऑल द 6 ऑब्जेक्ट लोकेशन along with their properties also. Clear? Ray diagrams and their locations. Okay, how many locations? 6 locations are there. 6 locations. Which location? Object location. Object location. ठीक है ना? Total 6 object locations are there. Okay, we'll draw the diagrams again and we'll write the properties of that also. Clear? First, I'll show the 6 object locations, complete location. What the first one? You know, first object location is at infinity. Okay, at infinity. This is the first object location. Okay, and what the second object location? Beyond the center of curvature. Beyond center of curvature. Curvature. Clear? This is the second one. Then third, at center of curvature. Okay, at center of curvature. At center of curvature. This diagram carries 6 marks. Okay, all points as well as my diagram also is there for this. Okay, clear? Then fourth one, okay, between focal point and center of curvature. Clear? Between focal point and center of curvature. Center of curvature. Clear? Now fifth one, at focal point is the next one. At focal point. Clear? And the last and final one, okay, between pole and focal point. Between pole and focal point. And these are the 6 object locations. Okay, this completed the 6 object location. Clear? Now for this one diagram is there that I'll draw. Clear? Carries 6 marks. It will come for 4 and 6 marks. Clear? With one diagram, basic diagram you have to draw first. Clear? Principal axis. Here you can draw the principal axis. स्मूथ रहने की वजह से हिल जा रहा है इसके, ठीक है.
So draw the principal axis. This is the principal axis. Clear? Then what I told here, concave mirror, curved concave mirror, you take 90 degrees. This is the 91, 90, and draw the curve. Keep here 90 and draw the curve. क्लियर? कितना लेना है यहाँ पे 50 एंड 50, मैं पूरा बता रहा हूँ लेकिन आप लोग पूरा नहीं करना, कंप्लीट नहीं करना है। ऊपर से 50 और ये अंदर से 50, यहाँ तक ही रुक जाए। अब मैं यहाँ बोर्ड पे वो उतारूंगा 50 तो बहुत छोटा आ जाएगा लगेगा, इसलिए मैं बड़ा होता हूँ। क्लियर? सो व्हाट वी हैव टू डू हियर ना, प्रोटेक्टर में, in protector from upside 50 and the down also reading is there 50 to 50 you have to join, make one curved surface. Okay, which curved surface here? Concave mirror curved surface. Okay, show the shading here. शेडिंग बाहर बताना कॉनकेव मिरर को, और कॉन्वेक्स को क्या करना है, अंदर शेडिंग बताना। इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट जो है अंदर रहता है कॉनकेव में, और उस कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टेड पार्ट क्या है, बाहर रहता है। ठीक है ना, तो ये तो डायग्राम हो गया अभी। अब इस पर 6 पूरे ऑब्जेक्ट लोकेशंस बताना है। ठीक है, डायमेंशन सेम डायमेंशंस। व्हाट इज डायमेंशन बी रिटन? डायमेंशंस क्या लेते हैं, 0, 2 and 4. What is 0 means here? Pole. What is 2 means here? Focal point. What is 4 means here? Center of curvature. Clear? So same thing we written. This is the pole. 0 is the pole here. 0 to 2. Okay, ये 2, ये क्या है, फोकल पॉइंट। यहाँ छोटा सा पॉइंट डाल देना। ठीक है, 2 to 4, यहाँ छोटा पॉइंट डाल के सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक्यूरेटली मेजरमेंट लिए। When you take accurately measurement, your diagram will be correct. Complete measurement will be correct. Accurate correct रहना। ठीक है ना, पेंसिल का निब भी जो है ना शार्प रहना, एकदम शार्प रहना। क्लियर ना, फर्स्ट वन बोला था, फर्स्ट वन क्या बोले थे, एट इन्फिनिटी बोले, तो इन्फिनिटी यहाँ पे कहीं भी एक जगह उतार सकते हैं। ओके, यहाँ पे इन्फिनिटी इधर, यहाँ पे कहीं एक जगह इधर इन्फिनिटी, पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, तो यहाँ पे हम इन्फिनिटी उतार सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ये एक ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे वाला, तो यहाँ पे एक उतार दिया। ठीक है, यहाँ से एक, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ओके, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये नेक्स्ट वन। ठीक है, फर्स्ट वन एट इन्फिनिटी, सेकंड वन बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही उतार देना, यहाँ पे नेक्स्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर, ये 3 हो गया। क्लियर, और द फोर्थ वन बिटवीन फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दोनों के बीच में। क्लियर, यहाँ पे ले लो। ठीक है ना, यहाँ पे एक। क्लियर, ये फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ले लो। देन फिफ्थ वन ईयर एट फोकल पॉइंट के एग्जैक्टली ऊपर, ये फोकल पॉइंट है, ये फोकल पॉइंट के एग्जैक्टली ऊपर। क्लियर, यहाँ आएगा। क्लियर, नाउ व्हाट द नेक्स्ट वन है, बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट, बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट, ये दोनों के बीच में एक। राइट, आप स्केल लेके उतारना ये सारे लोकेशंस। क्लियर, फर्स्ट लोकेशन है ये, सेकंड लोकेशन, थर्ड लोकेशन है, फोर्थ लोकेशन है, फिफ्थ लोकेशन है, सिक्स्थ लोकेशन। क्लियर, ऑल द लोकेशन अकॉर्डिंग टू द लोकेशन हैव पॉइंट गिवन द ईयर। दिस आर ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ये सारे क्या बोलेंगे इसको, ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, 6 ऑब्जेक्ट लोकेशंस है पूरे, क्या है, 6 ऑब्जेक्ट लोकेशंस। क्लियर, ऑब्जेक्ट क्या है, कैंडल है, सोर्स ऑफ लाइट, कैंडल ले सकते हैं यहाँ पे, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है ना, पहला क्या है, एट इन्फिनिटी। क्लियर, एट इन्फिनिटी पहला वाला, फर्स्ट वन, ये फर्स्ट वन एट इन्फिनिटी। सेकंड वाला क्या है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर कर्वेचर के पीछे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड वाला, ये सेकंड। ठीक है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड वाला। क्लियर, एंड देन नेक्स्ट फोर्थ वाला, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट, ये फोर्थ। क्लियर, देन
नेक्स्ट वन क्या है, एट फोकल पॉइंट, एट फोकल पॉइंट के ऊपर ही है, डायरेक्टली फोकल पॉइंट के ऊपर, ठीक है। एंड द लास्ट एंड फाइनल सिक्स्थ वन इज बिटवीन द पोल एंड फोकल पॉइंट, ये बीच में आ रहा है, ये सिक्स। सो दीज आर द सिक्स ऑब्जेक्ट लोकेशन. नाउ each and every individual locations we'll study. We'll draw the diagram of each and every location, and we'll write the properties of that location also. Okay, chalo next. अभी एक एक ऑब्जेक्ट लोकेशन उसके प्रॉपर्टीज के साथ करेंगे, ठीक है. टोटल 6 ऑब्जेक्ट लोकेशंस आर देयर. विल ड्रॉ ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट लोकेशन along with its properties. Dimensions always you take 0 to 4 only, ठीक है ना. और पेंसिल्स के निप शार्प रखे, डायग्राम करेक्ट रहेंगे, ठीक है. और द डायमेंशन वी आर टेकिंग हियर 0 to 4. What is 0 means here? Pole. And 2 means here focal point. 4 means center of curvature. ठीक है ना. चलो, what is the first one here now? At infinity. The first one object location is at infinity. At infinity. ठीक है. Now draw the diagram. Principle like this. Clear? This is the principle like this. This is the principle like this. And what I told, how to draw this diagram? Curved one. Okay, curved one. Here you can take. Clear? 50 from above and 50 from below. यहाँ नीचे है, जब नीचे का 50 वाला लेना, इधर ऊपर का 50 वाला लेना, ठीक है ना, ऐसा. ठीक है. आई एम टेकिंग फुल, मैं तो पूरा ले रहा हूँ, तुम लोग नहीं लेना. You should not take, then your diagram will go wrong. If you take the complete total 180, you should not take. Clear? ऊपर से 50 और नीचे से 50 you have to take. Clear? So object location. What is the first object location? At infinity. Infinity का मतलब है यहाँ कहीं डायग्राम, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रख रहे हैं हम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं. Clear? Here we are keeping the object. Here somewhere we are keeping the object. ऑब्जेक्ट क्या है? कैंडल. ठीक है. तो हियर वी केप द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना. नाउ फ्रॉम हियर यू ड्रॉ द इंसिडेंट रेस. एक दो इंसिडेंट रे ले सकते, ठीक है ना. First one, second one. Then here also you can take 2 incident rays. Easily you can understand if you take 2 or 4. Clear? This one, incident ray. Next one. Clear? These are all the incident rays. Clear? This is all the incident rays. So you can write here IR. IR is also IR, incident ray. This is the principal axis, PA. This is the principal axis. Clear? And show the arrow marks here. Clear? These are all the incident rays. Clear? What you have to write here? No? 0. What is 0? Pole. So pole. 0 to 2. Clear? 2 to 4. So here imagine here
2. Okay, here 4. Clear? Pole, focal point, center of curvature. Clear? And show the shading. Shading you have to do. Clear? Shading shows this is the concave mirror. शेडिंग करना भूलना ही नहीं, कंपलसरी शेडिंग करना, ठीक है ना। और मैं ये पूरा 180 ले लिया, आप 180 नहीं लेना, ऊपर से 50 नीचे से 50. ओके, ऑलवेज रिमेंबर, ऊपर से 50 डिग्रीज लो, अंदर से भी 50 डिग्रीज. ओके, देन योर डायग्राम विल बी एक्यूरेटली करेक्ट, ठीक है ना, एकदम करेक्ट आता है. ये सारे इंसिडेंट रहे, ठीक है. तो पहला रूल, ये 1850 को कौन सा रूल फॉलो करना है आप लोग को? रूल 1. रूल 1. ना व्हाट इज द रूल 1 टू ड्रॉ द रे डायग्राम? शुरू में कंप्लीट करे थे, याद है? व्हाट इज द रूल 1? इफ द इंसिडेंट रे, ओके, इफ द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्टेड रे शुड पास थ्रू द फोकल पॉइंट. ये पढ़ेंगे, फर्स्ट रूल है. Clear? If the incident ray, अच्छा सुनो, if the incident ray, what is the first rule here? If the incident ray, okay, parallel to principal axis, suppose this is the principal axis, this is the incident ray. If the incident ray is parallel to principal axis, after reflection, here after reflection, the reflected ray should pass through the focal point. ये एक रूल इसको लगता है. ओके, ये रूल से ये डायग्राम बनता है यहाँ, ठीक है ना. तो अब ये फोकल पॉइंट है, ये तो पूरे इंसिडेंट उतार दिया. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट शुड क्रॉस थ्रू फोकल पॉइंट, यहाँ से क्रॉस करा दो. पहला इंसिडेंट रे, ये पहला इंसिडेंट रे है, यहाँ से फोकल पॉइंट बराबर देख के उतारना, जरा भी मिस्टेक नहीं जाना इसमें, ठीक है ना. क्लियर? यहाँ पे मार्कर भी मोटा है ना, लाइन्स अलग है. आप लोग के पेंसिल रहेंगे, शार्प रहेंगे, तो आपका डायग्राम भी एक्यूरेट आएगा, ठीक है ना. यहाँ पे मैं बता सकूँगा, हर चीज कॉन्सेप्ट बता दूंगा पूरा एग्जैक्टली कैसे बताना. यू हैव टू डू इट विद द पेंसिल, स्केल, सेट स्क्वायर एंड प्रोट्रैक्टर. With that you have to do it. Clear? So first incident ray, this incident ray, okay, parallel to principal axis, after reflection the reflected ray passing through the focal point. यहाँ पे एक एरो मार्क बता दो इसको, ठीक है ना. सेकंड इंसिडेंट रे, इसको भी बता दो यहाँ से. ओके, ये भी क्रॉस हो रहा है ना, इसको भी बता दो यहाँ से फोकल पॉइंट. राइट, ये नेक्स्ट वन, ठीक है ना. फिर यहाँ से ये भी है ना, चेक द नेक्स्ट वन. सी, ये इंसिडेंट रे ले लो, ये फोकल पॉइंट, ठीक है ना, इससे क्रॉस करा दो यहाँ से. नेक्स्ट यहाँ भी इंसिडेंट रे है, ये भी ले लो, ये भी फोकल पॉइंट की तरफ. These are all the reflected rays. These are all the reflected ray. So you can write here RR, reflected ray. Clear? These are the reflected ray. All the reflected ray should pass through the focal point. यहाँ से पास करना. This is the focal point. यहाँ से पास हो. ठीक है? This is the first diagram. Okay, clear? Understood here? ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे? एट इन्फिनिटी, कहीं भी दूर, यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट रखे? इन्फिनिटी. पर्टिकुलर प्लेस, एक डिस्टेंस नहीं बताया यहाँ पे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस नॉट देयर. क्लियर? सो हियर वी kept here. Now we have drawn 4 incident rays we have drawn. And which rule we have applied here? First rule. What is the first rule here? If the incident ray parallel to principal axis, after reflection, the reflected ray should pass through the focal point. So 1, 2, 3, 4. These are all the incident rays are going here, touching the mirror here. After reflection, the reflected ray slowly crossing through the focal point. Clear? Okay. इसके properties लिख लो आप. इसके properties, image properties. Image properties. Clear? Image property. Now the first property, okay, see the image, sharp है, एकदम sharp, और point size छोटा image है. यहाँ जो फॉर्म हो रहा है छोटा इमेज है, तो उसको लिख सकते हैं शार्प. ओके, शार्प एंड पॉइंट साइज इमेज. पॉइंट साइज इमेज. ओके, शार्प एंड पॉइंट साइज इमेज. क्लियर? डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं इसको. ओके, यू कैन राइट डिमिनिश्ड इमेज भी बोल सकते हैं. डिमिनिश्ड.
डिमिनिश्ड इमेज, क्लियर, ये डिमिनिश्ड इमेज। देन कहाँ पे इसका इमेज पड़ रहा है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये मिरर है, मिरर के सामने इमेज पड़ रहा है ना, सो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ mirror, clear, and if the image is formed in front of the mirror, that image is called as a real image, clear, it is called as real image. These are the image properties, ठीक है ना, समझ में आ गया डायग्राम इमेज। once you write this all thing you will get a 6 marks, total 6 marks. It can come for 6 marks or it can come for 4 marks. Okay, long answer only. And ray diagrams are very very important, बहुत important है ray diagrams। लास्ट टाइम तो पूरे 6 के 6 डायग्राम दे दिया, 6 लोकेशंस बताओ वाला 6 मार्क्स के लिए, है ना। सो दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू राइट प्रॉपर्टीज देन ओनली यू विल गेट। ओके, ड्रॉ द डायग्राम परफेक्टली and write the properties, clear। what you have to take here ना, okay, completely we have to take the concave mirror। ये इमेज डायग्राम किसका है? concave mirror का है, ठीक है। concave mirror बता देखो, ये शेडिंग क्या करना है? बाहर करना है, ठीक है। रूल कौन सा फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे? फर्स्ट रूल फॉलो कर रहे हैं। विच रूल वी आर फॉलोइंग हियर ना? फर्स्ट रूल एट इन्फिनिटी, क्लियर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आएगा। Clear, on the same diagram we'll draw the next one, ठीक है। बेसिक डायग्राम तो सबके लिए सेम है, इसलिए मैं डायग्राम रब नहीं कर रहा हूँ, यही डायग्राम रखते जाओ, इसी पे बता दूंगा, ठीक है ना। सो दिस द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस द फोकल पॉइंट, दिस पॉइंट, क्लियर। व्हाट द सेकंड वन हियर नाउ? प्रॉपर्टीज विल बी चेंजिंग, clear। Now, for the second one here, beyond center of curvature. Second one, beyond center of curvature, beyond center of curvature, पूरा भी लिख सकते हैं, center of curvature, clear। Next one here, same diagram you have to draw here, clear। Then which rule we have to follow here? Rule 1 and rule 2 also we have to follow here, clear। Rule 1 and rule 2, rule 1 and rule 2 you can follow here for this diagram, rule 1 and rule 2, clear। So what is the rule 1 here now? If the incident ray parallel to principal axis, it should pass through the focal point. So the first one here, clear। You take the scale, protractor, set square and do it, okay। I am not doing with this whole thing here now, okay। I'll show this how it will come। एंड इफ यू यूज द स्केल, आप लोग स्केल और प्रोट्रैक्टर वगैरह साथ में लेके करेंगे, शार्प निब रख के आपका डायग्राम एक्यूरेटली करेक्ट रहेंगे, एकदम करेक्ट रहेंगे, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ कैसा करना है वो बता रहा हूँ, ओके, कंप्लीट बता रहा हूँ वो सुनिए, ठीक है। तो इंस्टेंट में क्या करें अपन? ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखे? पहली बात, वेर वी आर कीपिंग द ऑब्जेक्ट हियर, ओके, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे सपोज इमेजिन करो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे हम, यहाँ पे दिस इज द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है 1 सेंटीमीटर है स्केल का, स्केल का छोटा 1 सेंटीमीटर ले लेना, ये कभी कभी 1.2 1.4 भी ले लेना पड़ता, क्योंकि अगर सही आर्क नहीं है, सही डायग्राम नहीं है, तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं ऑब्जेक्ट का साइज को, ठीक है ना। सो इमेजिन दिस ऑब्जेक्ट साइज, क्लियर। नाउ ऑब्जेक्ट ले लिया। फर्स्ट रूल क्या बोला मैं यहाँ पे? व्हाट इज द फर्स्ट रूल? इफ द इंसिडेंट रे is parallel to principal axis, it should, after reflection, the reflected ray should pass through the focal point। तो उतार दो यहाँ पे, ये रहा आपका इंसिडेंट रे, ठीक है, IR, क्लियर।
arrow marks compulsory. Okay, this is the incident ray. This incident ray is parallel to principal axis. After reflection, the reflected ray should pass through the focal point. ये focal point से पार करें. ये क्या है? ये reflected ray है. This is the reflected. Clear? Now second rule also is there. What is the second rule here? No? If the incident ray pass through the focal point, it should, after reflection, the reflected ray should be parallel to principal axis. ये सेकंड रोल है इसको, ठीक है. तो अभी सेकंड रोल उतार रहे हैं आप, ठीक है. ये यहां से कर रहे हैं, यहां से उतार रहे, ठीक है. ये पार कर, ठीक है ना. फ्रॉम द ऑब्जेक्ट द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, दिस इज द सेकंड इंसिडेंट रे. सेकंड रूल फॉलो कर रहे हैं. इंसिडेंट रे शुड पास थ्रू द फोकल पॉइंट. आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे शुड बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे. आप स्केल यूज करना कंपलसरी. सिर्फ ऐसा नहीं उतारना जैसा मैं उतार. यू हैव टू यूज द स्केल, देन योर डायग्राम विल बी एक्यूरेट, इट विल कम क्लियर. इफ आई यूज द स्केल्स एवरीथिंग टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, सो आई एम शोइंग यू लाइक दिस. जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है ना. तो बता रहे थे पहला रूल, सेकंड रूल, दो भी खत्म कर लिया अभी यहाँ पे, ठीक है. ये सेकंड में अभी इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा था? यहाँ पे इमेज कहाँ? जहाँ ये रिफ्लेक्टेड रेस, दो रिफ्लेक्टेड रेस मिल रहे ना, ये पॉइंट यहाँ पे है इमेज. इन बिटवीन द सी एंड एफ, ये है आपका इमेज. Small image form work. Got it clear? Once again I'll tell you. Listen carefully. Okay. Draw the basic diagram first. Principal axis. ये principal axis है. Okay. Then curved surface. Concave mirror curved surface ये ना. Okay. ये shading कर दो. Then pole, focal point, center of curvature. Then apply both the rules. First rule and second rule. What is the first rule? If the incident ray is parallel to principal axis, after reflection, the reflected ray should pass through the focal point. Okay. Okay, इसका reflected ray नीचे आ गया. Second rule. Okay, if the incident ray from the object, you have to show this one. From the incident ray, ये object है. Object के ऊपर ये candle object, suppose ये object है, ये candle है आपका, ठीक है. This is the candle. ये candle. इसके लाइट के पास से लेना है अपने को, यहाँ से लेना है मेजरमेंट, ठीक है ना. प्रैक्टिकल जब करते हैं ये फ्लेम्स के पास से रेज आते हैं. क्लियर. सेकंड रूल, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट द इंसिडेंट रे व्हाटएवर passes थ्रू द फोकल पॉइंट से पास हो रहा. विच वन? इंसिडेंट रे. आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे शुड बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. पैरेलल है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अब ये दो रिफ्लेक्टेड रेज, यहाँ से एक रिफ्लेक्टेड रेज आ रहा, यहाँ से एक रिफ्लेक्टेड रे आ रहा. दो रूल का कहाँ पे मिल रहे दोनों? यहाँ पे मिल रहे. कहाँ पे मिल रहे? दोनों के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल पॉइंट के बीच में मिल रहे और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, ठीक है ना. तो अब इसके प्रॉपर्टीज लिखेंगे हम. इसके प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है. फर्स्ट प्रॉपर्टी, इमेज कहाँ फॉर्म हुआ? इन बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पुल. क्लियर. सो फर्स्ट पॉइंट वही लिखना, फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसका. ओके, कहाँ पे फॉर्म हो रहा? इमेज फॉर्म बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, बिटवीन फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दोनों के बीच में. देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल, इसके बीच में ये इमेज फॉर्म है. ये इमेज है, दिस इज द इमेज. यहाँ लिख लो, दिस इज द इमेज. ये इमेज फॉर्म हो गया, ठीक है ना. दिस इज द इमेज. क्लियर. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसका? कौन सा? इमेज बड़ा है या छोटा है? ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है, राइट. इमेज स्मॉल इमेज, क्लियर. दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी. ठीक है. छोटा है नहीं इमेज, ये छोटा है. ऑब्जेक्ट से इमेज क्या है? छोटा है, तो इस वजह से स्मॉल इमेज. देन इन कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा? इन फ्रंट ऑफ द मिरर. सो इट इज अ रियल इमेज. क्लियर. इन फ्रंट ऑफ mirror. So it is a real image. It is a real image. Clear. फोर्थ वन, कहाँ पे इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा? देखो यहाँ पे इमेज है, मिरर के सामने फॉर्म हो रहा, इन फ्रंट ऑफ मिरर. ओके, इन फ्रंट ऑफ मिरर. सो दिस इमेज इज कॉल्ड एज अ रियल इमेज. लेकिन कहाँ फॉर्म हो रहा? ऊपर या नीचे? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे? नीचे है. ये प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके नीचे, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस. So it is an inverted image. As I said, below. Suppose if it is a below of principal axis, so it is an inverted image. Inverted
image. These are the properties. Clear? समझ में आ गया होगा ना? ठीक है? Two rules we are following here. For the second one, beyond center of curvature में दो rule follow कर रहे हैं. Properties लिखना compulsory. You have to write the properties. Clear? To get the full marks. And again, I'm telling you, pencil के nib sharp होना है. Okay, scale लेना है, protractor लेना है, and set square. Okay, and easily with measurement. Okay, जैसा मैं उतारा ऐसा कर दिया, वैसा नहीं उतारना. Measurement करके ही उतारना. What the dimension? Dimension is very very important. Okay, always the dimensions are 0 to 4 only. Scale से count करके ले लेना 0 to 4. ठीक है ना? अब ये स्केल है, ठीक है? ये स्केल से 0 to 4. 3 dimensions. 0 pole, focal point, center of curvature. Your diagram will be exactly correct. Okay, use the accurate measurements. Okay, with scale. ठीक है ना? चलो next one. We'll do the next. This is the second rule. समझ में आ रहा होगा ना? साथ में उतारो और अच्छा समझ में आता. Along with me, if you do it, you will get a perfect, accurate diagram. ठीक है ना? चलो next one. What is the third one here now? Okay, at center of curvature. This is the third one. At center of curvature. Curvature. Clear? The third one here. Okay, and which rules we are applying here now? Same. Rule 1 and rule 2. Rule 1 and rule 2. These two we are applying once again here. Okay, at center of curvature. ठीक है? Pole, focal point, then center of curvature. Clear? What the dimension I'm taking here now? 0 to 4. Remember this always. 0 to 4 is the dimensional. 0 to 4. 0 nothing but pole, 2 is nothing but focal point, 4 is nothing but a center of curvature. ठीक है ना? अब ये सारा डायग्राम तैयार हो गया. दिस द बेसिक वन. हर डायग्राम के लिए यही बेसिक चीज है ना? ये ले लिए. अभी नेक्स्ट रूल 1 रूल 2 फॉलो कर लेना. ठीक है? व्हाट द रूल 1 ये ना? ये रूल्स टू ड्रॉ द राइट डायग्राम्स यू हैव टू लर्न इट परफेक्टली, मेमोराइज इट, अच्छा से याद कर लो, ब्रेन में रख लो 4 रूल्स. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द डायग्राम्स. अगर 4 रूल्स मालूम है तो ये 4 रूल्स कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर दोनों को भी अप्लाई कर सकते हैं ना. सो रूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो. क्लियर? सो व्हाट द फर्स्ट रूल, यू नो. ओके, इफ द इंसिडेंट रे is parallel to principal axis, after reflection the reflected ray should pass through the focal point. ठीक है? जो यहाँ से ले लिया. ठीक है? नो नो वेट, ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं यहाँ पे, बोलो बताओ. यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे? एट सेंटर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना. यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये अपना ऑब्जेक्ट. क्लियर? डोंट फॉरगेट, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट. क्लियर? अब ऑब्जेक्ट के थ्रू लेना. ओके, ड्रॉ इंसिडेंट रे. दिस इज द इंसिडेंट रे. क्लियर? दिस इज द इंसिडेंट आया इंसिडेंट रे. ओके, व्हाट इज द फर्स्ट रूल, यू नो? द इंसिडेंट रे, ओके, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों पैरेलल जा रहे हैं ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन. ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे शुड पास थ्रू द फोकल पॉइंट. ये फोकल पॉइंट है यहाँ. चलो फोकल पॉइंट से उसको पास करा देंगे. ये फोकल पॉइंट पास हो गया. क्लियर? ये फर्स्ट रूल हो गया. ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये आर आर. ठीक है? ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से पास हो गया. सेकंड रूल क्या है यहाँ पे? बोला सेकंड रूल, ये ना, द इंसिडेंट रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट हियर. ओके, द इंसिडेंट रे शुड पास थ्रू द फोकल पॉइंट. आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे शुड बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये सेकंड रूल. ठीक है ना?
तो अभी देख लो यहाँ से क्रॉस क्रॉस कर लो, ये लाइन क्रॉस होने के बाद यहाँ से फिर ये सेंटर फोकल पॉइंट से क्रॉस हो गया, ठीक है ना। देन अभी देखो यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड है, ठीक है ना। अभी देख लो, अभी इमेज देख लो एग्जैक्टली लोकेशन, ये रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर, दिस इज इंसिडेंट रे, ये आईआर है, सेकंड आईआर है, ठीक है। ये वाला क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, clear, this is the reflected ray, clear. Second rule, what the second rule, the incident ray should pass through the focal point, okay. After reflection, the reflected ray should be parallel to principal axis, parallel to principal axis. अब देखो दोनों कहाँ कट हो रहे हैं, यहाँ पे कट, ये भी एक रे है, ये पॉइंट सेम सी के नीचे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे, तो इमेज भी यही फॉर्म हो रहा है, एग्जैक्टली सेम, क्लियर। अब इसके प्रॉपर्टीज लिखेंगे और अच्छा समझ आता है, ठीक है ना। और द प्रॉपर्टी, इमेज कहाँ फॉर्म भी हो रहा है वो पहले लिख लो, ओके। इमेज formed at C, formed at C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ इमेज मिल गया, यहाँ पर इमेज उसके नीचे ही मिल गया, ठीक है, उसके बिल्कुल नीचे इमेज मिल गया, ठीक है ना। ये एरो मार्क नीचे होता है, ठीक है ना, ऐसा नीचे होता है, ठीक है। देन सेकंड, और द सेकंड प्रॉपर्टी राइट, सेम साइज इमेज मिल रहा है, दोनों के साइज भी सेम है, दोनों के यहाँ से साइज, इसका साइज और इसका साइज, दोनों का साइज एक जैसा है, तो सेम साइज लिखो, इमेज साइज इज सेम, सेम साइज, दोनों का इमेज का साइज क्या है, सेम, बोथ ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट हियर एंड द इमेज साइज आर बोथ आर equal, same here, okay. Where the image is formed here, image is formed in front of the mirror, front of the mirror, so it is a real image, it is a real image, clear. Always remember, image अगर आईने के सामने है, in front of the mirror, it is a real image only, okay. Back of the mirror, virtual image, ठीक है ना, remember this always, okay. Front of the mirror, the image which is formed in front of the mirror, it is called as the real image, clear. कहाँ पे image पड़ा है, below the principal axis, below the principal axis, principal axis के नीचे पड़ा ना, so the inverted image, fourth property what you write here, inverted image, inverted image, right, finish. This is the third one here, clear, समझ में आ गया। ये स्केल से मेजरमेंट करके ही बता, यूज द स्केल एंड देन डू इट, देन ओनली यू विल गेट द डायग्राम परफेक्टली, ओके। मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि डायग्राम ऐसा एग्जैक्टली यू विल गेट, हाउ आई एम डूइंग लाइक दैट, एग्जैक्टली यू विल गेट द डायग्राम, एक्यूरेटली करेक्ट मेजरमेंट यू हैव टू टेक, देन योर डायग्राम विल बी करेक्ट, ओके। नेक्स्ट विल डू द नेक्स्ट वन। Next, fourth one. Next, fourth one, between focal point and center of curvature. Fourth one, between focal point and center of curvature. Clear? Which rule we have to follow here now? One and two. 1 and 2, ये दो रूल फॉलो करना है यहाँ, ठीक है। ये जो मैं डायग्राम्स उतार रहा हूँ, मेरे एक ऑलरेडी एक वीडियो है, ओके, उसमें चेक करो आप, स्केल से, ये आपके कंपास बॉक्स के जो स्केल इरेजर है, इसी से मैं उतारा, कैसा उतारना, क्या डायमेंशन है, क्लियरली मैं बताया उसमें। सपोज अगर किसी को कंफ्यूजन है इसमें, तो वो मेरा वीडियो देख सकते हैं आप, ठीक, पूरे डायग्राम से, कंप्लीट डायग्राम्स आई हैव गिवन इन द वीडियो, क्लियर। सो हियर rule 1 and rule 2, clear. For focal point, center of curvature, okay. Pole
focal point, center of curvature. Dimension 0 to 4, always 0 to 4 is the dimension. Now rule 1 and rule 2 we have to follow here now, this diagram. Clear? Now where we have to keep the object here in between the focal point and center of curvature. Focal point and center of curvature, यहाँ पे आपका object आना, यहाँ पे object. Clear? Here you keep the object. Clear? Here we keep the object. Now, what is the first rule here? If the incident ray is parallel to the principal axis, after reflecting, it should passes through the focal point. ठीक है ना? तो ये बता दो ये क्या है incident ray. Okay, with the scale you have to draw. Clear? Then after reflection, it should pass through the focal point. ये pass हो गया. ठीक है ना? ये इधर pass हो गया. Then second, what is the second rule here now? If the incident ray passing through the focal point, it should be parallel to the principal axis. ठीक है? यहाँ से सेम ऑब्जेक्ट से लेना, फोकल पॉइंट के थ्रू पास कर देना, ये फोकल पॉइंट के थ्रू पास कर देना, ये इंसिडेंट रे. सो आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे शुड पास थ्रू द इट शुड बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अभी इमेज का फॉर्म हुआ देखो, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. Show the arrow marks. Okay, clear. And see, this one is the incident ray. Second rule, this is the incident ray. Clear. Then after reflection, this is a reflected ray. RR. Reflected. Where the image is formed, you know, see image is here. Okay, यहाँ पे image form हो गया. Clear. Here the image is formed. Now write the properties. Image properties here. Clear, understood? You know, two rules we are following. Okay, where we kept the object, candle कहाँ पे रखे, object यहाँ पे, in between the center of curvature and focal point यहाँ पे रखे. From the object, the incident ray should parallel to the first rule is okay, parallel to the principal axis. After reflection, the reflected ray should pass through the focal point. First rule. Second rule, if the incident ray passing through the focal point, after reflection, the reflected ray should be parallel to the principal axis. So where the two reflected rays are meeting, this point, here the image is formed. ये image है. Okay, this is the image. This is the object. ये object. This is the object. Clear? Now, what are the properties you can write here now? Found beyond the form. Image is found beyond C, center of curvature. Beyond center of curvature. This is the first one. See? Where the image is formed here, behind the center of curvature के beyond, उसके पीछे आया image, तो इसलिए इसको beyond, ये first property इसका लिख सकते हैं. Then image कैसा है, object छोटा है, image बड़ा है, ये तो वो लिख दो next property. Okay, image size is a bigger size, ऐसा लिख सकते हैं, big size image, ठीक है ना, big size image. Next one, image कहाँ पे है? Where the image is formed, in front of the mirror, so it is a real image, clear. And fourth one, okay, below the principal axis, it is not above the principal axis, it is below the principal axis, so it is an inverted image. These are the properties. Clear? समझ में आ गया होगा ना? क्लियर? नहीं भी समझ में आया तो मेरा और एक वीडियो है, वो भी चेक करिए, क्लियर बता दी. होप यू हैव टू अंडरस्टैंड. एक एक चीज मैं क्लियर बता रहा हूँ ना, तो समझ में तो आना ही होगा. ठीक है ना? चलो नेक्स्ट वन. Next one, okay, at focal point. Next, what is the next object location? At focal point. At focal point. The next one. Clear? Now here, which rule we have to follow here? Rule 1 and rule 3 you have to follow here now.
यहाँ पे थोड़ा चेंज है, ठीक है। एट फोकल पॉइंट पे विच रूल्स वी हैव टू फॉलो, रूल 1 एंड रूल 3. Okay, now draw the basic diagram. Principal axis, clear? Then clear, show the shading here now. आप लोग स्केल यूज करना, ठीक है ना, यू हैव टू यूज द स्केल एंड एवरीथिंग, क्लियर? नाउ दिस इज द पोल, ओके, एंड दिस वन इज द फोकल पॉइंट, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर? 0 to 4 ये डायमेंशन स्केल से ही लेना, और कंपलसरी स्केल से लेना, स्केल से ही काम करना सारी चीज़ें, मेरी तरह रफ मत उतारिए. ओनली आई एम शोइंग यू हाउ टू ड्रॉ इट, बट यू हैव टू यूज ऑल द टूल्स, ओके, मैथमेटिक्स टूल्स, ऑल यू हैव टू यूज इट, क्लियर? चलो, दिस आर द वन. नाउ रूल 1 and 3. What is the rule? Where we are keeping the object at focal point. ये focal point है, ठीक है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे हम, ये ऑब्जेक्ट, here we keep the object, clear? Now what is the first rule? First rule क्या है यहाँ पे? First rule here, okay, the incident ray should be parallel to principal axis, clear? After passing, after reflection, the reflected ray should pass through the focal point, है ना, तो ये incident ray है, clear? After reflection, it should pass through the focal point, ये focal point, okay? Use the scale, clear? Scale use करना जरूरी है, ठीक है ना? तो अभी इसको क्या करना है यहाँ पे, सी पे, और एक है ना, थर्ड वन है, थर्ड का पॉइंट क्या पड़े थे, ओके, इफ द इंसिडेंट रे, ओके, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट विल नॉट डेविएट, इट रिट्रेस द सेम पाथ, ये पढ़े थे ना, तो अभी यही उतारो, यहाँ सेंटर ऑफ, यहाँ से ले, ऑब्जेक्ट से क्लियर रहना, ऑब्जेक्ट के पास से जाना, ये कंप्लीट लाइक दिस, यहाँ से डॉटेड उतारो, डॉटेड, ठीक है? इसको भी और आगे ले लो, देखना इमेज कहीं फॉर्म होता है क्या, देख लो, पॉसिबिलिटीज है इमेज फॉर्म होने की, दिस नो पॉसिबिलिटीज एट ऑल, क्लियर? इमेज फॉर्म ही नहीं हो रहा है ना, ये इंसिडेंट रे है, ओके, ठीक है, ये भी इंसिडेंट रे है, क्लियर? ये जो आ रहा है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, बोथ, ओके, बोथ द रेस यहाँ पे, ओके, बोथ द रेस आर द पैरेलल, दोनों भी पैरेलल है, लेकिन दूर दूर तक इमेज ही फॉर्म नहीं हो रहा, देयर इज नो इमेज एट ऑल हियर, बस इतना ही डायग्राम है, इतना छोटा डायग्राम, easy diagram, but carries 6 marks then, clear? Image properties will write. Image properties, clear? Now what is the image property for this here? Image is not formed at all here, no image, okay, no image, image is not formed at all here, no, clear? Image कहीं मिल रहा है हमको, कहीं भी image नहीं, rays are not what happens crossing each other, there is no chance at all here, clear? रेल की पटरी की तरह जा रही है, okay, railway tracks like that they are going, they are not crossing each other, okay, in our diagram they are not crossing each other at all here, so there is no image at all here, okay? So and what is the rays here, no, parallel to each other, second image property में लिख सकते हैं आप कि rays are parallel, rays are parallel. Rays are parallel. Finish. This is the fourth one. Next one. Last one now, okay? Pura ray diagrams completed. The last and final one now. Sixth one. Sure. Sixth one क्या है? Between pole and focal point. Last object location is what? Between pole and focal point. Pole and focal point. ठीक है, दिस इज द लास्ट वन। और इसके लिए कौन से रूल फॉलो कर रहे हैं? 2 रूल, ओके, अगेन 2 रूल्स, रूल 1 एंड रूल 3, दिस रूल्स वी हैव टू फॉलो हियर, ठीक है? व्हाट द डायमेंशंस वी आर टेकिंग हियर, सेम डायमेंशंस हर रे डायग्राम में डायमेंशंस लिखना जरूरी है, यू हैव टू राइट इन डायमेंशंस,
So what are the dimensions we are using here? 0, 2, 4. 0 is nothing but a pole. 2 is focal point. 4 is center of curvature. Clear? This you have to write it. Clear? Chalo, draw the diagram now. Draw the principal axis. Okay. Then concave mirror. Okay. Shade the concave mirror. Shading you have to do. Okay. Compulsory you have to do the shading. Clear? Now what is here now? It is pole, then focal point, center of curvature. Clear? These are dimension 0, 2, 4. Clear? Chalo. Where we are keeping the object now here? Between pole and focal point. This is the last one. Pole and focal point. Pole and focal point. Object we are keeping here in middle of this. यहाँ पे object रख रहे हैं. ये object. ठीक है ना? This one is the object. Is the object. Clear? For the first rule here, first rule क्या बोले थे? What is the first rule? Okay, the incident ray should parallel to principal axis. After reflection, the reflected ray should passes through focal point. This is the first rule. So first rule करेंगे. Okay. This is the incident ray. Clear? It should be parallel to principal axis. After reflection, the reflected ray should pass through focal point. यहाँ से pass. यहाँ से pass. Use the scale. Use the scale, you will get the perfect diagram. ठीक है? ये पास हो गया. Now for the third rule ये ना, अभी third rule करे थे ना अभी यहाँ पे. Okay, if the incident ray passes what happens through the center of curvature, it will not deviate. It retraces the same path. Clear हो गया ना? तो center of curvature से लेंगे. इसका पीछे कर लेंगे. यहाँ कर देंगे यहाँ से. Start now. यहाँ पे डॉटेड लाइन्स तोड़ दें यहाँ पे. ठीक है? ये डॉटेड लाइन. ठीक है? तो यहाँ भी whether these two races are meeting or not, that we have to see here. Okay, whether they are meeting or not. Clear? They are meeting a point. ये दोनों एक पॉइंट पे आके मिल जाते हैं. दो लाइन्स मिल जाते हैं. है ना? ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है. This principal axis is the principal axis. क्लियर? अभी देखो इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ बताओ अभी. कहाँ पे इमेज है? यहाँ पे कहाँ पे मिल रहे रिफ्लेक्टेड रेज? यहाँ पे मिल रहे. दिस इज द इमेज. क्लियर? दिस इज द इमेज. द टू एरेक्ट इमेज. ओके, इमेज. ये इमेज फॉर्म हो गया. ठीक है ना? चलो इसके प्रॉपर्टीज लिखेंगे अभी. इसके प्रॉपर्टीज थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टीज है इसके. ठीक है? इमेज प्रॉपर्टीज. इमेज प्रॉपर्टीज. Clear? I'm writing capital, small, everything I'm writing here now. You don't mix up like that. खिचड़ी वर्क मत करो, मैं कर रहा हूँ. But you don't do it. Okay? You write the perfections. Then first one. पहला वाला क्या लिखेंगे इसके अंदर? Okay? कहाँ पे इमेज फॉर्म प्रॉपर्टीज में कहाँ पे फॉर्म हो रहा है इमेज? यहाँ पे बियॉन्ड द मिरर. बियॉन्ड द मिरर. मिरर के बाहर. ये अंदर इमेज फॉर्म नहीं हो रहा, मिरर के बाहर फॉर्म हो रहा. बियॉन्ड द मिरर. मिरर के पीछे फॉर्म हो रहा. एग्जैक्ट. क्लियर? और कैसे इमेज का साइज कितना है? देखो बिग साइज है. सेकेंड वन, इमेज साइज इज बिग साइज. क्लियर? बिग साइज. देखो ये बिग साइज इमेज फॉर्म हो गया यहाँ पे. और बियॉन्ड द मिरर, मिरर के बाहर है यहाँ पे. ठीक है? इफ द इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड द मिरर, इट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज. ठीक है ना? Clear? If the image is formed beyond the mirror, that image is called as the virtual image. Now, where it is formed here now? Below the principal axis. अब तक जितने भी करें हम image below the principal axis ही form है. लेकिन यहाँ पे देखो above the principal axis. Okay, above the principal axis है यहाँ पे. It is above the principal axis. PA, above the principal axis. So the image is erect image. Image कैसा रहेगा? Erect image. Erect image. Right? This is the last and final one here. Now, clear?
होप समझ में आ गया होगा सबको, नहीं भी आया तो मेरा और एक वीडियो है वो भी देख लो, क्लियर कट हर चीज़ बता दिया मैंने। मेरे साथ साथ मेरे वीडियो देखते हुए आप लोग करिए, पेंसिल से, स्केल से, सेट स्क्वायर से आप आराम से करिए, साथ में आराम से पेपर लेके उसमें करिए, आराम से आ जाए, ठीक है। ऐसा रफ हैंड नहीं करना, ओके। स्केल वगैरह यूज करके डायमेंशंस परफेक्टली लेना, डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, या 0 to 4 डायमेंशन, इसी की वजह से आपका एक्यूरेट मेजरमेंट आता, मतलब आपका इमेज सही फॉर्म होता है। कहाँ पे इमेज फॉर्म होना है वहां पे एग्जैक्टली फॉर्म होता, ओके। अगर आप मेजरमेंट सही नहीं लिए, इमेज फॉर्मेशन करेक्ट नहीं रहता, देन योर डायग्राम विल बी रॉन्ग। प्रॉपर्टीज नहीं लिखेंगे, फुल मार्क्स नहीं आते। यू हैव टू टेक द प्रॉपर्टीज। और जब ये रे डायग्राम्स उतारे ना, मैं लास्ट के रे डायग्राम्स कलर से उतारा, आप सारे के सारे रे डायग्राम्स कलर से उतारे, मेरा वो वीडियो देखो, मैं पूरे रे डायग्राम्स डिफरेंट कलर्स आई हैव यूज्ड फॉर डिफरेंट रेस। इंसिडेंट रे एक कलर, रिफ्लेक्टेड रे एक कलर, कॉन्केव मिरर एक कलर, प्रिंसिपल एक्सिस एक कलर, डिफरेंट कलर्स आई हैव यूज्ड सो दैट इजीली ऑल द रेस विल बी पॉइंटेड आउट, ओके। दिखाई देता, इंडिकेट हो सकता, क्लियर दिखाई देता कि अच्छा अच्छा दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ये सारी चीज मालूम होती, क्लियर, ओके देन, थैंक यू।